Yeah, hello students. How are you? I hope you all are well. Students, today we will learn chapter number 5, that is frictions. That is friction. Now class, frictions. We have learned that the friction is a number that shows a small part of a whole or a collection. Okay, this whole or collection can be either an object or a group of object. क्लास वो object भी हो सकता है या फिर वो group of objects भी हो सकते हैं. When we divide an object or a whole into equal parts, then each part represent a fraction of the given object or a whole. क्लास ये सर्कल है, मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ तो ये क्या होगा, ये जो पार्ट्स हैं उसके क्या होंगे, फ्रैक्शन है उसका. ठीक है. A fraction when represent in numbers has two parts, a numerator and a denominator. Okay class, the number above the line in a fraction is called numerator. It shows the number of selected or shaded part that we have. The number below the line in a fraction is called denominator. Thus, it shows the total number of a part of an object or a whole that we have. Thus, see, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल था और जो मैंने जिसमें से मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. ओके, तो ईच पार्ट क्या उसका फ्रैक्शन है, बट मैंने उसमें से 2 पार्ट्स को क्या किया है, शेड किया है. सो मैं टोटल नंबर कहाँ लिखूंगी, नीचे 1 2 3 4. ओके, और जो शेडेड पार्ट है वो क्या होगा यहाँ पर 2. मीन्स ये क्या होता है हमारा न्यूमरेटर एंड ये होता है हमारा डिनोमिनेटर. तो fraction is equal to number of selected or shaded part of an object or a whole. The total number of equal parts of an object or a whole, numerator or denominator. Example 9 upon 11 is a fraction in which 9 is the numerator and 11 is the denominator. It can be represented as shown below. Total number 11 and shaded part is 9. Now let us devise the following fractions. Class fraction with the same denominator are called like fraction. जिनके सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, और क्लास फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे अनलाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शन विद वन एज न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है वो क्या होता है यूनिट फ्रैक्शंस. नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस are two or more fractions which have the same value c. Understand? Proper fraction क्या होता है क्लास, आर दोस फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है किससे, डिनोमिनेटर से. वो क्या होता है हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन क्लास. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसके ऑपोजिट होता है, आर दोस फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज greater number than the denominator. Improper fraction are those fraction in which the numerator is a greater number than the denominator. क्लास सी, यहाँ पर क्या होंगे, जो हमारे न्यूमरेटर वो सभी उससे बड़े होंगे किससे, डिनोमिनेटर से. Now class, a mixed fraction is a combination of a whole number and a part fraction. See, these are the example of mixed fractions. Now simplest form of a fraction. Class, a fraction is said to be in the simplest form. It is if its numerator and denominator have no common factor except 1. See class, reduce 15 upon 21 to its simplest form. Class, हम उसको ऐसे टेबल से उसको रिड्यूस करेंगे जिसमें वो दोनों नंबर आए, जिसमें वो कॉमन नंबर होना चाहिए. द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 एंड 21 इज 3. तो 15 5s are 3 5s are 15 and 3 7s are 21. क्लास सी, अब ये जो है दोनों नंबर क्या है, किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकते, सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं. तो नाउ 5 and 7 have no common factor except 1 and hence 5 upon 7 is in the simplest form. Understand? Now class, divide the numerator and the denominator of the fraction by their highest common factor to get its simplest form. मैंने क्या किया यहाँ पे डिवाइड ही तो क्लास सी. Now comparison of fractions. Comparison of like fractions. Class, like fraction have the same denominator. You know, they can be comparing their numerators. The fraction with the greater numerator is the greater fraction. Compare 5 upon 9, 8 upon 9. Class, कौन सा नंबर बड़ा होगा, 8 upon 9. Obvious, because 8 is greater than 5. Here 19 is greater than 13. Now class, comparison of unlike fraction. Class C का fraction with different denominators are called unlike fractions. जिसके denominator क्या होते हैं, different होता है, वो हमारे unlike fractions होते हैं. Two cases arise while comparing unlike fractions. Case 1, fraction with the same numerator, 5 upon 12, 5 upon 23, 5 upon 17, 5 upon 11 in descending order.
प्लस यहाँ पर क्या है, हमारा न्यूमरेटर सेम है। ओके, इन केस द फ्रैक्शन विद द लार्जर डिनोमिनेटर इज द स्मॉल, जो बड़ा होता है वो क्या होता है, जिसका लार्जर होता है डिनोमिनेटर, वो क्या होता है, हमारा छोटा होता है, स्मॉलर। Hence, in the above fraction, 5/23 is the smallest. Next, 5/17, 5/12, 5/11 is the largest. Therefore, ये क्या होगी, इनका अरेंज किया है हमने. Now, case 2. अब हमारे पास सेकेंड केस आता है क्या, फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स. या यहाँ पर जो हमारे न्यूमरेटर्स थे वो सेम थे, बट यहाँ पर जो हमारे न्यूमरेटर्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है. Now, class, convert these types of unequal fraction into like fraction by making the denominator same. अब हम उनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. अरेंज 2/3, 4/5, 5/6 इन असेंडिंग ऑर्डर. क्या सी द easiest way to do this, the easiest way to do this is to find the LCM of all the denominators. क्लास हम easiest way में तभी कर सकते हैं कब, जब हम अपने डिनोमिनेटर को LCM लेंगे. तो LCM of 3, 5 and 6 is 30. Now multiply both the numerator and the denominator of all the fraction by a suitable number to get the denominator as 30. प्लस हमने क्या किया, उनके डिनोमिनेटर्स को सेम किया. देन हमने क्या किया उसको, अब वो हमारे कौन से फ्रैक्शन हो गए, अब वो हमारे लाइक फ्रैक्शन हो गए हैं. ठीक है, अब हमने उनको अपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. इजी. नाउ क्लास कम ऑन एक्सरसाइज 5A. क्वेश्चन नंबर 1. इंसर्ट द एप्रोप्रिएट साइन इन द सर्कल्स. 8/13, 5/7. क्लास यहाँ पर क्या है, हमारे जो दोनों हैं वो क्या है, डिफरेंट है. सो हम उनको जो डिनोमिनेटर है पहले उनको हम सेम करते हैं. हाउ, इसकी मल्टीप्लाई किससे करूंगी मैं, 7 से, एंड इसकी मल्टीप्लाई करूंगी मैं 13 से. नाउ क्लास 8 7 जार 56, 91, 65 एंड अगेन 91. तो क्लास विच इज बिगर, 65 और 56? सो 65, दिस इज बिगर. Now class come on B part, 5/9 and 10/18. अगेन हम उनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. कैसे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्लास 18 5s are 90 and 18 9s are 162. तो क्लास 90 अपॉन 162. क्लास ये बोथ आर इक्वल. अब हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं. आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं. 2 5s are 10, 2 9s are 18. क्लास ये बोथ आर इक्वल. अंडरस्टैंड. नाउ क्लास rest of the parts do yourself. Come on, question number 2. Arrange the fractions in ascending order. क्या सी, अब हमारे पास क्या है, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, सेम है. तो हम उनको सिंपली उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. 1/11, 3/11, 5/11 एंड 7/11. Understand class? Rest of the parts do yourself. Come on, question number 3. Now arrange the fractions in descending order. क्लास descending order में क्लास सी, अब हमारे क्या होते हैं, जो डिनोमिनेटर क्या हमारे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं और न्यूमरेटर भी इनके डिफरेंट है. तो अब हम इनको क्या करते हैं, इनके जो हम एलसीएम लेते हैं पहले. सी क्लास, वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ तो क्लास you can take here 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5. Now 2 1s are 2 1s are, so 5 2s are class 5 2s are 10. So LCM हुआ हमारा 10. So हम यहाँ पर 10 को रखेंगे. Now 4 2s are 8. Now 7 2 and 3 2s are 6. Now class यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 8/10, 7/10, 2/10 एंड 6/10. अब हमारे क्या है, जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है. हम उनको इजीएस्ट वे में डिसेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई कर सकते हैं. हाउ, प्लस सी 8/10 मीन्स 4/5. नाउ 7/10 again. Now 6/10 that is 3/5. Now 2/10, 1/5. मैंने क्या किया, उनकी वैल्यू को
वैल्यूज को पुट किया है. ओके. Now class, rest of the parts do yourself. Come on, addition of fraction. Now class, addition of like fraction. Class, to add two or more like fraction, add the numerator and put the answer over the same denominator. Class C, अब हम दोनों को न्यूमरेटर्स को प्लस करेंगे और अपने डिनोमिनेटर को ऐसे ही रख देंगे. अंडरस्टैंड. सी, अब मैंने 15 को यहाँ पर लिखा, 4 + 7 11, सो हमारा दिस इज द आंसर. नाउ addition of unlike fraction. To add two or more unlike fractions, first change them into like fraction and then add. क्लास पहले हमें unlike fraction को like में change करना होगा, then हम उसको add करेंगे. How? अब हम उनका LCM लेंगे तो हम उनको डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, देन हम उनको ऐड करेंगे, वही हमारा आंसर होगा. अंडरस्टैंड. नाउ कम ऑन एग्जांपल नंबर 2. राधिका ate 1/3 of pizza while her sister ate 1/4 of the pizza. How much did they eat all together? Now class, we need to add 1/3 and 1/4. Let us convert them into like fraction and add them. Let us convert them into like fraction and then add. All together they add 1/3, 1/4. So class हमने उसको change किया, that is 4/12 and 3/12. हमने उसको add किया 7/12 of the pizza. Thus they add 7/12 of the pizza altogether. Understand? Now class, addition of mixed fraction. Example 1, add 5, 1/8, 2/3, 2, 3/4. Now class, there are two ways to adding mixed fraction. First, add the whole number, that is 5 + 2, 7. Now add the fractions. Now LCM लेंगे, then हम उसको add करेंगे, वही हमारा आंसर होगा. Now class, अब ये तो मेथड हुआ हमारा 1. अब हम मेथड 2 में भी कर सकते हैं. अब मेथड 2 क्या होगा हमारा, हम उनको मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अब फिर हम उसको ऐड करेंगे. तो क्लास सी, हमने पहले उसको चेंज किया इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन हमने उनका एलसीएम लिया, देन हमने उनका ऐड किया, फिर से हमने उसको कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में. अंडरस्टैंड. नाउ कम ऑन एग्जांपल नंबर 2. Mr. Gupta bought 2 3/4 kg of sugar and 3 1/2 kg of rice. Find the total weight of the sugar and rice bought by him. क्लास सी, अब हमने क्या किया, उनको पहले हमने क्या किया, उनको चेंज किया है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन हमने उनको ऐड किया है. अंडरस्टैंड. Thus Mr. Gupta bought 6 1/4 kg of sugar and rice. Come on, example number B. क्वेश्चन नंबर 1, एड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. क्लास हमारा क्या ये तो लाइक फ्रैक्शन है, हम उनको सिंपली ऐड कर देंगे, दैट इज 55/25. अंडरस्टैंड क्लास. हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं 11/5. अंडरस्टैंड. अगेन 9 + 5 for 11, that is 14/11. Rest of the parts do yourself. Come on class, question number 2, solve the word problems. Question number 1, Amit spent 1/2 of his pocket money on books and 1/4 on snacks and drinks. What fraction of the pocket money did he spend? Class C. Now Amit spent on books, that is 1/2. Now on drinks and snacks, तो कितना स्पेंड करता हो, that is 1/4. Now class, total money did he spend? Total money is equal to 1/2 plus 1/4. अब क्लास ये क्या है, हमारे अनलाइक फ्रैक्शन से हम उनको चेंज करेंगे लाइक फ्रैक्शन में. नाउ इट इज 4, दैट इज 3/4. तो आवर आंसर इज 3/4. द आंसर. हमने क्या किया, उसका एलसीएम लिया, देन उनको ऐड किया. अंडरस्टैंड क्लास. तो he spent 3/4 of his money altogether. Understand class? Now class, rest of the parts do yourself. Come on.
subtraction of fractions. Now class, subtraction of like fractions. To subtract two or more like fractions, subtract the numerator in order and put the answer over the same denominator. class हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऐड किया था हम यहाँ पे माइनस करेंगे. नाउ 5 माइनस 2 3 और हमारा डिनोमिनेटर सेम था तो हमने उसको ऐसे ही एज इट इज रख दिया. नाउ सबट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. To subtract two or more unlike fractions, first convert the fractions into like fraction. हम unlike fraction को क्या करेंगे, हम पहले हम ऐड करने के लिए क्या करते थे, उनको चेंज करते थे लाइक फ्रैक्शन में. ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे. हम to subtract two or more unlike fractions, first convert the fractions into like fractions by finding the LCM of the denominator and then subtract. Now class 2 upon 7 from 7 upon 8, हमने उसको पहले चेंज किया. 7 upon 8 तो हमने मल्टीप्लाई किया, सो हमारा एलसीएम था 35 upon 40, 16 upon 40. अभी क्या हो गया, चेंज हो गया हमारे लाइक फ्रैक्शन में, so that is 19 upon 40 is our answer. Now subtraction of mixed fraction. First convert the mixed fraction into improper fraction with the same denominator and then subtract. तो चेंज करेंगे देन हम उसको subtract करेंगे, that is 3 upon 4 is our answer. Example number 2. सीमा had 10 meters of blue ribbon. उसके पास 10 meters blue ribbon है, उसमें से उसने she used for 3 by 8 meters of the ribbon. How much of the ribbon is left with her? Now class, with the length of the ribbon 10 meter, length of the ribbon used this, thus the length of the ribbon left with सीमा. Now class, पहले 10 था, अब मैंने उसको चेंज किया improper fraction में, then मैंने एलसीएम लेके क्या किया, मैंने उसको ऐड किया, दैट इज 5 by 8 मीटर. Hence 5 by 8 meter of the ribbon is left with सीमा. Now come on exercise 5C. Question number 1. Subtract the following fractions. Now class C. 12 minus 9 upon 19. Now class 3 upon 19. Okay. Again 8. 7 minus 3 is equal to 4 by 2. Understand class, rest of the parts do yourself. Come on, question number 2. Solve the following word problems. Now class, a bottle contains 5 upon 3 liter of the milk. If I drink 3 by 5 liter, how much water will be left? Now class, quantity of milk is equal to 5 by 3. Drank milk, इसमें से कितना पिया गया है क्लास? That is 3 by 5. Now class, left milk is equal to 5 by 3 minus 3 by 5. Again मैं उसका एलसीएम लूंगी 15. 3 5s are 15, 5 5s are 25 minus 5 3s are 3 3s are 9. Now class, that is 15 upon 15 answer. Okay class, so 16 by 15 liter milk left. अंडरस्टैंड क्लास, मैंने क्या किया, उसको माइनस किया, पहले उसको अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया, देन मैंने उसका एलसीएम लिया और मैंने उसको सबट्रैक्ट किया. अंडरस्टैंड? यस क्लास, rest of the parts do yourself. Come on, multiplication of fractions. Now class, multiplying a fraction by a whole number. Example, there were 12 monkeys on a tree. एक tree पर 12 monkeys हैं. Each monkey was given a banana, but each monkey ate only 3 by 4th of the banana given to it. How many bananas were eaten in all? Now class, total number of bananas eaten by the 12 monkeys, that is 12 times. Now class, 12 multiply 3 by 4. Since multiplication is repeated addition. Now class, step 1, write the whole number as a fraction with 1 as the denominator. Now cancel out the common fraction in the numerator and the denominator. Cancel किया हमने, 4 3s are 12. Now step 3, multiply the numerators and the denominator, that is 3 3s are 9. Therefore 9 bananas were eaten in all. Any fraction multiplied by 0 0.
क्लास सी हम किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या होता है 0 होता है ना। एनी फ्रैक्शन multiply by 1 is equal to the fraction itself. You can see here. Now multiply a fraction by another fraction. To multiply a fraction by another fraction, follow the steps below. Step 1, multiply the numerator and the denominator respectively. Now step 2, simplify the reduce to its lowest form. हम उसको lowest form में जरूर हैं तो reduce करेंगे. Now multiply 3 upon 4, 2 upon 9. प्लस हम उसको डिडक्ट कर सकते हैं. 2 2 जार 4, 3 3 जार 9 एंड हम उसको सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1 अपॉन 6 अवर आंसर. ओके, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एज इट इज. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी डन बाय कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर्स. कैंसिल मैंने यहाँ पे क्या किया था, कैंसिल किया था. ओके वो आपको इजीएस्ट लगेगा. आप उसको यहाँ पर ही रखकर आप उसको कैंसिल करेंगे और आप उसका आंसर आप उसको इजीली कर पाएंगे. Now example number 2, find 3 by 4, 2 upon 9. Now class again हमने क्या किया यहाँ पे कैंसिल किया 1 upon 6. Then हमने again 4 4 are 16, 3 3 are 9, again 3 4 are 12, 1 by 2. Of means multiplication. Class of means क्या होता है, multiplication. Multiplying a fraction by a mixed fraction. Step 1, change the mixed fraction into an improper fraction and cancel out the comma. Cancel out the common factors in the numerator and the denominator. Step 2, multiply the numerator and the denominator respectively. Step 3, simplify to get a mixed fraction. Again example number 1, हमने क्या किया उसको पहले चेंज किया improper fraction में, देन हमने उसको कैंसिल आउट करके वो दिस इज आवर आंसर. अगेन चेंज किया 64 अपॉन 7. नाउ हमने उसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, देन हमने अगेन मिक्स फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर दिया सिंपली. Okay, now exam, come on exercise 5D, question number 1, multiply and write your answer the lowest form. Now 8 5s are 40, 5 is our answer. Now class 3 by 11. Okay, class हम किसी को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होता है 0, 6 3s are 18, 3 are 30. Okay, rest of the parts do yourself. Come on question number 2, solve the following. Now class again हम उसको ऑफ का मल्टीप्लाई, ऑफ का मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई. 9 upon 11, 3 3s are 9, 3 upon 11 is our answer. Now class 2 upon 3 of means multiply 6, 3 are 6, 2 are 4 is our answer. Rest of the parts do yourself class. Come on question number 3, solve the following word problems. Now class 2 upon 3 kg of sugar and 1 upon 3 kg of flour are needed to bake a cake. How much sugar and flour are needed to make 48 such cakes? Now class quantity of sugar, that is 2 by 3 kg. Now class quantity of flour, that is 1 by 3 kg. Yes class, quantity of sugar and quantity of flour. Now हमें कितने केक्स बनाने हैं, now 48 हमें क्या बनाने हैं, केक्स बनाने हैं. Class C, to make 48 cakes, sugar is equal to, अब क्लास हमारे पास शुगर है 2 by 3 और हमें केक्स कितने बनाने हैं 48. नाउ क्लास 3 1s are 3, 3 6s are 18, 3 2s are 32. Now class 32 kg of sugar we needed to bake 48 cakes of sugar. Now class अब हमें क्या नीड करना है, हमें अब फ्लावर चाहिए, फ्लावर की क्वांटिटी बतानी है. नाउ क्लास क्वांटिटी ऑफ फ्लावर 1 by 3, हमें केक बनाने हैं 48. नाउ अगेन दैट इज 16 kg ऑफ फ्लावर हमें चाहिए 48 केक को बेक करने. नाउ क्लास फ्लावर, अंडरस्टैंड क्लास, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. क्लास हमारे पास इतनी तो शुगर थी एंड इतनी हमारे पास फ्लावर्स थे, बट इतनी क्वांटिटी ऑफ शुगर थी, इतनी क्वांटिटी ऑफ हमारे पास फ्लावर था.
और हमें कितने केक्स को बेक करना था 48, सो हमें कितनी शुगर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज 32 kg एंड 16 kg ऑफ फ्लावर। अंडरस्टैंड क्या क्लास? यस क्लास। Rest of the parts do yourself. Come on, reciprocal of a fraction. Reciprocal of a fraction. Yes, reciprocal means we obtain the reciprocal of a given fraction by interchanging its numerator and denominator. Means उसका opposite कर देना, उल्टा कर देना, interchange करेंगे। Means 2/3 ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर, तो अब हम इसको 3/2 कर देंगे। अब ये हमारा न्यूमरेटर होगा और ये हमारा डिनोमिनेटर। हमने क्या किया, उसको रेसिप्रोकल कर दिया। For example, the reciprocal of 7/9 is 9/7 and the reciprocal of 5/11 is 11/5 and the reciprocal of 2/3 is 3/. Understand? The reciprocal of any whole number is 1 divided by the whole number. For example, the reciprocal of 7 is 1/7. The reciprocal of a mixed fraction is obtained by first converting हम उसको कन्वर्ट करेंगे it into an improper fraction and then interchanging its numerator and denominator. For example, 1/4 5/4 and उसका reciprocal क्या होगा 4/5. Division of fractions. Now class, division of a whole number by a fraction. Example number 1, if 1/4 liter of oil is filled in one bottle, then how many bottles will needed to fill 2 liters of oil? Let us represent this pictorially. Class, 1 liter, 1 liter. Now class, we find that 8 bottles are needed to fill 2 liters. In short, we are trying to find that how many 1/4 liters are there in 2 liters, which is given by 2 divided by 1/4. 2 divided by 1/4 is nothing but 2/1 multiply reciprocal of 1/4, that is 2/1 multiplied by 4/1 is equal to 8/1 is equal to 8. Now thus 8 bottles will be needed. Come on, steps of dividing a whole number by a fraction. Step 1, find the reciprocal of the divisor. Step 2, multiply the dividend with the reciprocal of the divisor and write the answer the lowest form. Example number 2, divide 9 by 3/4. Again, step 1, the reciprocal of 3/4 is 4/3 here. 3/4 divisor and 9 क्या होगा हमारा डिविडेंड। सो स्टेप 2, मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको, दैट इज 12 इज आवर आंसर। नाउ 9 divided by 3/4 is equal to 12. Division of a fraction by a whole number. The steps of dividing a fraction by a whole number are the same as dividing a whole number by a fraction. The only difference is that you need to write the whole number as a fraction with denominator 1. क्या होगा हमारा डिनोमिनेटर 1 होगा क्लास। Example, 1/2 liter of milk is to divided equally among 5 children. 1/2 liter milk हमें किस में डिवाइड करना है, 5 बच्चों में डिवाइड करना। How much milk will each child get? प्लस एक बच्चे को हमें कितना मिल्क वो मिलेगा। 1/2 divided by 5 liters of milk. Now 1/2 divided by 5/1. Now 1/10. Since 1/5 is the reciprocal of 5/1. Thus each child will get 1/10 liters of milk. Now class, division of a fraction by a fraction. Divide 5 by 8 by 15/9. Now class, हम divide के साइन को चेंज करेंगे रेसिप्रोकल करके किसमें, मल्टीप्लाई में। तो क्लास हम उसको डिडक्ट करेंगे। 5 3s are 15 and 3 3s are 9. So 3/8 is our answer. So 5/8 divided by 15/9 is equal to 3/8. Example number 2, divide 3/7 by 8/14. अगेन हम उसको चेंज करेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद हमारा जो साइन होता है डिवीजन का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन के साइन में। देन हम उसको डिवाइड करेंगे, क्रॉस आउट करने के बाद हमारा जो आंसर है इट इज 9/4. नाउ क्लास, कम ऑन एक्सरसाइज 5E, क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइडिंग द फॉलोइंग. नाउ क्लास, यू कैन सी हियर इज 3, तो हम उसको चेंज करेंगे। 8/3 मल्टीप्लाई बाय 6, मैंने इसको चेंज किया, डिवाइड के साइन को किसमें चेंज किया, मल्टीप्लाई में। नाउ 3 2s are 6, 8 2s are 16. अगेन क्लास 2/1 multiply 3, now it is 6. Understand class? Rest of the parts do yourself. Come on, question number 2. Solve the following word problems. If 1/3 can of paint is used to paint a window, then how many window can be painted with 6
cans of paints. Now class, question number 2. Now class, quantity of paint for a window. एक विंडो के लिए कितना था क्लास? 1/3. Understand class? Now quantity of paint for, हमें अब उसकी विंडोज की वैल्यू बतानी है. कितनी कैन है हमारे पास? 6 कैन है. अंडरस्टैंड क्लास? अब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ पेंट तो है, हमारे पास 6 कैन का पेंट है, लेकिन हमें उसमें विंडोज कितनी कवर हो सकती है हमें ये बताना है. तो 1/3 का जो रेसिप्रोकल होता है वो 3. तो 3 × 6 इज इक्वल टू 18 विंडो. ओके. नंबर ऑफ वॉल्स, number of windows that can be painted in 6 cans, that is here. Okay, 1/3 का हमने रेसिप्रोकल किया, that is 3. 3 × 6, 18 विंडोज को हम उसमें पेंट कर सकते हैं. I hope you all have understood very well. Yes class, now your chapter is completed, prepared very well, and we will meet you in next